I have got only one contact number till now. I've got this contact number from Disket Angmo. Rest, I think, is hesitating to share their contact number. So please, you can share your contact number. Okay. चलिए आपने अगर अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिए हैं तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. Let's start today's topic. Okay, in last two classes we discussed about the force. If you remember, we discussed about the force between two charges. Means we discussed about the Coulomb's law in two different forms. One was a scalar form and another was vector form. That we have already done, है ना? हमने already इस पे discussion किया है Coulomb's law पे, ठीक है? और if you remember, the force between the two charges Q1 and Q2 placed at a distance of r. अगर आप दो charges ले लो and they are placed at a distance of r. So according to the Coulomb's law, the force between the two charges will be written as k q1 q2 divided by r square. Do you remember this? याद है आप लोगों को? Yes, sir. Okay, so this was the magnitude of the force between two charges. What we are going to discuss today is electric field. हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? We are in position to discuss a new topic of the same chapter, electrostatic, that is electric field. हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्कशन करेंगे. वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है? आप में से किसी को आइडिया है व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी को? एनी वन ऑफ यू हैज एनी आइडिया of electric field? Can share your idea with me. You can unmute your mic and you can tell me what is electric field. Anyone? No, work done in bringing a charge is not electric field. Work done in bringing a charge is potential. It is not electric field, it is potential. ठीक है? चलो मैं बताता हूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो आपको एक बात पता है कि जब भी हम किसी चार्ज को रखते हैं ना, व्हेनेवर वी प्लेस अ चार्ज समवेयर इन अ स्पेस, हम कहीं पर भी अगर कोई चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज अपने नेबरिंग चार्जेस पे या अपने पास वाले चार्जेस पे फोर्स लगाता है. इट एक्सर्ट्स फोर्स. ठीक है? अब मेरी बात समझो सर. देखो एक बात तो इस बात को ऐसे समझो कि एक तो फोर्स, किसी बॉडी पे फोर्स लगाने का एक तरीका, वन ऑफ द वे टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉडी इज कि अगर मान लो ये कोई बॉडी है एंड यू वांट टू पुश दिस बॉडी, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप पुश करोगे इसको, तो मतलब आप मान लो अपने यू आर पुशिंग दिस बॉडी विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, तो योर हैंड एंड दिस बॉडी विल बी इन कॉन्टैक्ट. मतलब आप इस पे फोर्स लगाओगे, बट कैसे लगाओगे? when your hand will be in contact with this body, right? आप hand से इसको push कर रहे हैं, तो your hand is in contact with this body and by this process you will be exerting some force on this body. Force तो समझते हो ना सब? You will be exerting force on this body with your hand, right? इसका मतलब your hands are in contact with this body. So this is one way of exerting a force. और ऐसा फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है. वेयर देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू, मतलब दो के बीच में अगर कॉन्टैक्ट हो और कॉन्टैक्ट के कारण, इफ ड्यू टू द कॉन्टैक्ट, अगर एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स. सबको समझ आ रही है बात? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए. ये कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? Yes, sir.
ओके, बट बेटा एक बात बताओ कि अगर मैंने एक चार्ज यहां पर रखा और दूसरा चार्ज आई हैव प्लेस समवेयर हियर, अगर मैंने कोई दूसरा चार्ज यहां पर रख दिया, तो एज सच तो दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है. इज देयर एनी कांटेक्ट? Obviously q1 and q2 are separated, they are separated by some distance, means there is no contact between the two. मतलब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है. Still q1 is exerting some force on q2 and in return q2 exerts some force on q1. मतलब q1 q2 पे फोर्स लगा रहा है और q2 q1 पे फोर्स लगा रहा है विदाउट एनी कांटेक्ट. कोई कांटेक्ट नहीं है. Still one charge is exerting a force on another charge. तो ऐसा फोर्स where there is no contact, still the force acts. Such a force is called as non-contact force. कैसा फोर्स कहते हैं हम इसको? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसा फोर्स विच एक्ट्स विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. फोर्स एक्टिंग विदाउट एनी कॉन्टैक्ट. अगर कोई फोर्स लग रहा है और बॉडीज में कोई कॉन्टैक्ट नहीं, स्टिल फोर्स इज एक्टिंग, तो सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इज इट क्लियर? अच्छा, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपने क्लास 11th में भी पढ़ा था. क्लास 11th सबने पास किया है? नहीं किया? तुम बोलते नहीं हो. यस सर. हाँ, अच्छा पास किया है, चलो बहुत अच्छी बात. बेटा एक बात बताओ, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था क्या? डिड यू स्टडी ग्रेविटेशनल फोर्स इन क्लास 11th? यस In सर, that पढ़ा case है. also, है ना, पढ़ा हुआ है. In that case also you have heard that the two bodies attract each other by a force that is called as gravitational force. और वो gravitational force भी जब लग रहा होता है ना, तो without any contact that force acts. So it is also an example of non-contact force. मतलब without any contact between the bodies, a gravitational force is acting. So this is also the example of non-contact force. अब मेरी बात समझो. कॉन्टैक्ट फोर्स तो हमें फिर भी समझ में आता है कि सर कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये है कि आपने इस बॉडी को अपने हाथों से पुश कर दिया, यू आर स्टैंडिंग हियर एंड यू आर पुशिंग दिस बॉडी. तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि द कॉज फॉर दिस फोर्स इज कॉन्टैक्ट बिटवीन यू एंड द बॉडी. मतलब आप और ये जो बॉडी है, इन दोनों में जो एक कॉन्टैक्ट डेवलप हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टैक्ट यू आर एबल टू पुश दिस बॉडी और यू विल बी एबल टू पुल दिस बॉडी. राइट? मतलब आप खड़े हैं और आपने अपने फ्रेंड को पुश किया, तो मींस योर हैंड्स आर इन कांटेक्ट विथ योर फ्रेंड एंड देन यू आर पुशिंग योर फ्रेंड बाय बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट. है ना? तो ये तो फोर्स हमें समझ में आ रहा है कि दिस फोर्स इज देयर बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज. बट यहां पर चार्ज कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है सर. इवन विदाउट एनी कांटेक्ट, one charge is exerting some force on the another charge. तो ये ऐसे फोर्सेस, हाउ डज दे एक्ट? मतलब ये जो फोर्सेस हैं जो बिना कांटेक्ट के लगते हैं, विदाउट एनी कांटेक्ट दिस फोर्सेस एक्ट्स, ये फोर्सेस कैसे एक्ट करते हैं? व्हाट इज द कॉज? है ना? हाउ डज दे एक्ट? ये तो हमें समझना पड़ेगा. भाई कांटेक्ट वाला केस तो हमें समझ में आता है कि बिकॉज आप कांटेक्ट में है, दैट इज व्हाई यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन अनदर बॉडी. बट यहां पे तो कोई कांटेक्ट नहीं है, स्टिल देयर इज अ फोर्स. तो हाउ डज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट? मतलब क्वेश्चन है, हाउ डज नॉन कांटेक्ट फोर्सेस एक्ट? तो आप बात समझो सब. होता क्या है? होता यह है कि whenever you place an object anywhere in the space, that object creates a region of space. मेरी बात समझना, listen to me carefully. Whenever you will place an object somewhere, that object creates a region, an invisible region. ठीक है? एक रीजन वो क्रिएट कर लेता है. रीजन कह रहा हूं मैं, 3 डायमेंशनल. मतलब वो रीजन विल बी along x axis as well as along y axis as well as along z axis. मतलब एक रीजन क्रिएट हो जाती है ना? एक स्पेस क्रिएट हो जाता है अराउंड अ गिवन चार्ज. ठीक है? जब भी आप किसी चार्ज को रखेंगे तो उसके अराउंड एक रीजन खुद ब खुद फॉर्म हो जाता है. इट फॉर्म्स इटसेल्फ. जब उस रीजन में
जब उस रीजन में हम किसी दूसरे चार्ज को लाके रखते हैं, when the another charge is placed in that region which is around a given charge, मतलब किसी एक चार्ज के अराउंड ये रीजन है, इसमें अगर मैं दूसरे चार्ज को लाके रखूं, समझ रहे हो आप? तो ये होता क्या है कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज क्या करता है, फोर्स लगाता है। मतलब ये वाला चार्ज इस दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स लगाता है। इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझो, इफ समवन हैज विजिटेड योर हाउस, इफ समवन इज योर गेस्ट, तभी तो आप अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाओगे ना। मतलब आप उसको टी ऑफर करोगे, आप उसको वाटर ऑफर करोगे, कब? when he will come to your house, he will visit your house, right? अगर कोई बंदा, if someone is not coming to your house, तो आप ऐसा तो नहीं है कि you will go and stand on the road and you will ask everyone and you will offer tea to everyone. This is not the way, right? This is not the life goes, right? आप किसी को टी ऑफर कब करोगे? For that you the guest should come to your house, then only you will be able to offer him tea or snacks or whatever. But if he is going by your house, if somebody is walking by your house, तो आप बाहर जाके तो उसको टी ऑफर नहीं करोगे। इसका मतलब कि वो जो गेस्ट आपके घर में आया है, who has visited your house is that region of space in which if someone comes, then you will show your hospitality. If someone is outside, you will not show any sort of hospitality. ऐसा समझो। Is it clear or not? Please tell me yes or no. क्या हो गया? Yes, sir. Similarly, whenever you keep a charge somewhere, it creates its own house which is invisible. ये अपना घर खुद बना लेता है और वो दिखाई नहीं देता. It is not visible. It will be invisible for you. When a charge is placed in that house, when another charge is placed in that house, then this charge exerts a force either of repulsion or attraction on this second charge. क्लियर हो गई बात? जब वो इस रीजन में आएगा तब, if this charge is outside this region, मान लो if this charge is kept outside, मतलब इसके घर में नहीं रखा गया, if this charge is not in the house of this charge, ये वाले चार्ज का घर में ये नहीं है, तो फिर ये इस पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं लगाएगा. इज इट क्लियर और नॉट? इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई भी चार्ज तभी लगाता है when another charge is kept in that region which is developed around a given charge. पता नहीं कंफ्यूज हो गए भाई? इस चार्ज, ये चार्ज किसी चार्ज पे फोर्स तभी लगाएगा जब दूसरा चार्ज इस रीजन में लाई करे. If the another charge is not lying in this region, if it is outside this region, तो ये वाला चार्ज उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, कोई बातचीत नहीं हो रही है. समझ रहे हैं आप? तो ये रीजन जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. नहीं समझ आया? नहीं समझ में आया? सर समझ आया या नहीं आया? भाई वो रीजन, किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसमें वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा सारे बोलो तो, क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की? सारे बोलो तो. मैं सबके नाम तो प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मगर जिसके कर पाऊंगा उससे पूछ लूंगा. स्टैंजिन कोरल, कोरल और कोरल, वॉट एवर इट इज, व्हाट इज दिस स्टैंजिन कोरल? स्टैंजिन, everyone is can hear me please?
If I'm calling out some name, please respond to me. Stanzin coral. I think Stanzin is not interested. Stanzin lamo. Yes, sir. Can you please tell me what is electric field? How do we Uh, define electric? Hmm? In the your words. space, the Hmm? space around an electric Around a charge, charge in in which in which it it can exert attract or or repel repel another another charge charge is called electric is field. known as. Very good. That's the definition. That's the definition. ठीक है? Stanzin coral. I didn't get any response from you. If you can, if you are able to hear me, then please unmute your mic and please, if you can respond. नहीं. Okay. So a space around a charge in which it attracts, or especially you can say in which it attracts or repel and another charge is called as electric field. तो remember this. अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे समझता हूं कि if you have built your house or the house in which you are living, हर किसी का जो हाउस है या घर है, is it of same dimension or is it of same size? या किसी का घर बड़ा भी हो सकता है, किसी का घर छोटा हो सकता है? बोलो, सबके घर का साइज सेम होता है दुनिया में? No, sir. नो सर, नो सर, अलग अलग होता है। अलग अलग होता है. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. नो सर, बहुत बढ़िया. तो मुझे एक बात बताओ, अगर अलग अलग होता है तो किसी जैसे, अच्छा इस बात को कोई माइंड ना करे प्लीज, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि भाई घर अगर बड़ा है, इफ द हाउस इज बिग, तो दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी वेल्दी, बहुत रिच है ना वो. जिसका घर जितना बड़ा, हम कहते हैं कि वो उतना ज्यादा रिच है. और घर जितना छोटा, हम कहेंगे भाई उतना कम है उसके पास, है ना. वेल्थ उतना कम है उसके पास, यही तो कहते हैं ना. इन द सेम वे, ये जो मैंने आपको बताया कि किसी भी चार्ज के अराउंड स्पेस होगा, तो ये जो स्पेस है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये किस चार्ज के अराउंड स्पेस है. फॉर एग्जाम्पल समझिए मेरी बात. भाई स्पेस तो हर चार्ज के अराउंड होगा, बट ये स्पेस एक्सटेंड कितने डिस्टेंस तक करेगा, अप टू व्हाट डिस्टेंस दिस स्पेस विल एक्सटेंड, इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. किस पे डिपेंड करेगा ये? बोलो बच्चे. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इफ आई से आई हैव अ 5 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसके अराउंड भी ये रीजन होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. और अगर मान लो वी हैव अ 2 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसके अराउंड भी ये रीजन होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. बट मुझे एक बात बताओ, कौन सा रीजन ज्यादा होगा? whose region will be extend for a larger distance, 5 coulomb या 2 coulomb? 5 कूलम। Of course 5 coulomb, because 5 coulomb charge is more in magnitude than that of 2 coulomb. तो हम ये कह सकते हैं कि the region of space for 5 coulomb will extend in a larger area than that of 2 coulomb. मतलब जैसे रियल लाइफ में wealth defines the size of your house, in the same way the extension of this region, in the case of electrostatic, the extension of this region depends on the magnitude of charge. More is the strength of the charge, more will be the region, more will be the distance up to which this region will be extended. ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया. इसका मतलब सर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी देयर फॉर एवरी चार्ज, but the extension of that electric field, or in other words, the strength of that electric field will not be same for all the charges. Did you understand? By if there is anyone living in this world, एक ideal world मान लो, ideal. So if there is a person living in this ideal world, so every person will have his own house, but the size of their houses will depend on the wealth that
the person has. More is the wealth, more would be the size of the house. Less is the wealth, less will be the size of the house. And I told you ideal world की मैं बात कर रहा हूं. वैसे तो रियल लाइफ में मेनी पीपल आर देयर हु डजंट हैव एनी हाउस. ठीक है, बट मैंने आइडियल बोला है, वर्ड मैंने यूज किया आइडियल, जहां पर हर किसी के पास हाउस हो. क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? इसका मतलब हाउस इज द नेसेसिटी ऑफ एवरी पर्सन, बट हाउ large or how small that house would be depends on the wealth. Similarly, if there is a charge, there will be this space called as electric field, but the strength of this electric field will not be same for every charge. Is it clear to all or not? And on which factor will this strength will depend? So this will depend on the magnitude of the charge itself. Means what? Means this electric field is a common term. Remember that. Electric field is a common term. For example, house. House is a common term. House can be big, house can be small, house can be new, house can be old, right? So house is a common term. By just saying house, we don't understand how big or how small is that. In the same way, electric field is the common term for every charge. Means every charge will have this space known as electric field. But how strong that electric field will be or how weak that electric field will be, it depends on the magnitude of charge. So first of all, I'll define what is electric field. For you, I'll define what is electric field. The electric field is what? I just defined it so many times. Electric field is simple, it will be simply defined. A region of a space, space around a charge, around a charge, in which, yes, in which it interacts, लिख देता हूं मैं. I'm using the word interact, which can be either attraction or repulsion, in which it interacts with another charge, with another charge. This is a common definition. ठीक है? This is the common thing. Means if there is a charge, there will be an electric field. There is a charge, there will be an electric field. But how the strength of that electric field will be defined? समझ रहे हो आप? जैसे for example, if I say a student, तो student is a common term. That a student can be a good student, I mean very intelligent student, or that a student can be very weak, or that a student can be moderate, or you can say average student, neither very intelligent nor very weak, right? The student is a common term. Similarly, electric field is a common term. Now I'm in position to define the strength. How we will define or how we will measure the strength of this electric field. So the quantity by which we measure the strength of this electric field, that quantity is called as electric field intensity. Are you getting what I'm saying? Everyone, please unmute your mic and respond to me. Why do we need this term? We need this term to define a strength of electric field. है ना? We need to define this term because to define the strength of electric field, because electric field is a common term. It doesn't gives you any strength. It only tells you that if there is a charge, there will be a region which is called as electric field. But how strong or how weak will that region be? That is not mentioned by, or that it cannot be understood by this definition called as electric field. So we needed another quantity which can give the strength of this electric field, and this another quantity which gives the strength is known as electric field intensity. I hope मेरी बात सबको समझ में आ रही है. अब मेरा पॉइंट ये है कि भाई ये इसको कैसे डिफाइन किया. तो सर मैं जिससे पूछूंगा that student will have to unmute and will have to respond. I may be wrong to pronounce your name, but I can pronounce this as Wangmo's iPhone. I can see your name, Wangmo's iPhone. Yes, sir. Okay, good. What's your Yes, sir. name, beta? Is it Wangmo's or Wangmo's? Yes, What is it? My name is Wangmo, sir. Sonam Wangmo. Wangmo. Sonam Yes, Wangmo. sir. Can you tell me, beta, how will you understand
कि a student is very good student, or how will you understand a student is a very weak student? If I yes, By if I give you a task to analyzing analyze different, and how will you analyze? by analyzing through a test or Through a examination or test. result. Very good. Yes. Through a test, or by taking some sort of exam, or by just checking his or her result. Yes, In sir. the same way, what we acha, how will you analyze कि teacher is a very good teacher for you, or you are unable to understand that teacher, or you are unable to understand the concept of that teacher? How will you do that? How will you differentiate a good or a bad teacher? Let's say, just for an example, Um, First I'll by study. just taking a demo class, right? Yes, sir. Demo है ना? class. Exactly. And how much you are able to understand that teacher, more you will be able to understand. For you, the teacher will be good, and if you understand less from that teacher, you will Yeah. simply claim that teacher is not suitable for you, right? Yeah. Exactly, sir. Similarly, if you have to measure the electric field intensity, how will you do that? अब try to understand. ये जो Yes, sir. चार्ज है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजर कर रहा हूं, ठीक है, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस. I want to measure the strength of this electric field due to this charge. तो जिस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं, the charge whose electric field we want to measure is known as source charge. What charge we call it as? Source Source charge. charge. ठीक है, it is called as source charge. अभी इसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम करते क्या हैं? We bring in a very small magnitude charge. ठीक है, एक चार्ज हम लाके रखते हैं जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है. इट इज वेरी स्मॉल. ठीक है, दिस चार्ज इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज. व्हाट इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज. ठीक है, मैंने क्या किया, इसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए मैंने यहां पे क्या लाके रखा, एक टेस्ट चार्ज लाके रखा, और इसकी मैग्नीट्यूड बहुत कम है. कितनी कम है? तो जनरली हम इसको यूनिटी मान लेते हैं. क्लियर है? टेल मी यस और नो. तो जब इस चार्ज को आप लाके रखोगे, तो ये सोर्स चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा बेटा? आइदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा. यस सर। अब मेरी बात समझना, इस बात को ऐसे समझो. लगाएगा, बहुत बढ़िया. अब मेरी बात को ऐसे समझो. सेरिंग एंगमो, डिड आई प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली? सेरिंग, TSERING. इज इट सेरिंग और व्हाट? Yes, sir. Okay, is it sharing or T-sharing or something else? What's your name? Sir, it's cheating. Sitting. Okay. Sitting, if a friend of yours comes to you and tells you कि उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, he is very powerful, है ना, he has enough of a strength, और आप उसको बोलो कि अच्छा ठीक है, ये प्रूफ करो पहले, proof that you have a lot of strength. So what he can do to prove this? उसका सबसे एक आसान तरीका है, मान लो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्लीज इस बात को बस एग्जांपल के लिए लेना, ये डोंट टेक इट अदरवाइज. मान लो कि मैं आया और मैंने सेरिंग को कहा, और या मैंने किसी को भी कहा, मान लो, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, मान लो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि मेरे अंदर बहुत ताकत है, आई हैव इनफ ऑफ स्टैमिना एंड आई हैव इनफ ऑफ पावर, और वो मेरा दोस्त कहे, माय फ्रेंड टेल्स मी कि प्रूफ दैट यू हैव इनफ ऑफ स्ट्रेंथ, तो मैं बहुत आसान काम करूंगा, मैं एक पंच मारूंगा उसको, एक पंच लगा दूं. ठीक है, जितना तेज पंच लगेगा उसको, उसके अकॉर्डिंग वो ये समझ लेगा कि मेरे अंदर कितना ज्यादा पावर है या कितना कम पावर है. मानते हो? यस सर। भाई सिंपल सा एक लॉजिक है ना, कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर बहुत ताकत है, और कोई कहे नहीं 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 ये तो ऐसे ही बोलता है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसको एक पंच मार दूं, एक स्लैप मार दूं, स्लैप कर दूं उसको. तो जितना तेज उसको लगेगा वो पंच या स्लैप, वो कहेगा भाई उतना ताकत है. जितना कम लगेगा वो कहेगा इतना कम ताकत है. इसका मतलब माई स्ट्रेंथ कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स दैट आई विल एक्सर्ट ऑन माई फ्रेंड.
यही तो मतलब हुआ कि मेरा स्ट्रेंथ कैसे फील होगा, by the force that I'll exert on my friend. Is it clear? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Similarly bete, when I placed this charge which is called as test charge, तो इस सोर्स चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया, तो इस फोर्स की कुछ वैल्यू होगी। अब इस टेस्ट चार्ज पे ये फोर्स कितना लगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, मतलब इस टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया और उस फोर्स को किससे डिवाइड कर दो, टेस्ट चार्ज की वैल्यू से। यू डिवाइड द फोर्स बाय द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। तो ये जो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये जो वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और रिप्रेजेंट करते हैं ई से। आपको समझ आया या नहीं आया, मुझे ये बताइए। आया सर। आया? आपने एक टेस्ट चार्ज लाके रखा और आपने उस पर फोर्स मेजर कर लिया, उस फोर्स को आप टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं ऐसे कह सकता हूं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। समझ में आ गया कि व्हाट इज द आइडिया टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये अब हम बार बार नहीं कर रहे होंगे, बट दिस इज द आइडिया, दिस इज हाउ वी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एन आइडिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज एवरीवन रिस्पॉन्ड टू मी। सबको ये क्लियर है या नहीं है? जी सर। सबको? यस सर। ओके गुड, जस्ट नोट करो इसको, फिर मैं आगे बताता हूं। नोट कर लिया सबने? एवरीवन डन? नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Okay, so I'm erasing this, whatever written on the screen, I'm going to erase it now. अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसको जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह लेते हैं, ठीक है। एवरी टाइम आई विल नॉट बी मेंशनिंग दिस टर्म इंटेंसिटी। जनरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह लूं तो समझ लेना कि एफ अपॉन क्यू नॉट की बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यू रोट इट एज एफ अपॉन क्यू नॉट। Force is what kind of quantity is force? Force is a scalar quantity or vector? Vector. Vector quantity. Very good. And what kind of quantity is charge? What type of quantity is charge? Scalar. Okay, beta Sonam, good. If you divide a vector by a scalar, the result will also be a vector. If you divide a vector by a scalar quantity, the result you will get will be a vector. This means that electric field intensity is a vector quantity. Electric field intensity is a vector quantity. Is it clear? And what will be the unit for this electric field? The unit for this electric field, see, we have in the numerator, we have force. The unit, SI unit for force is Newton,
and the SI unit for the charge is coulomb, so the unit for electric field intensity will be Newton per coulomb. This is the SI unit. SI unit for electric field is Newton per coulomb. Is it clear? Now, coming to one more point. See, I told you this is a source charge, which I call it as Q, and this is the test charge, which I call it as Q naught. And let's say the distance is R between the source charge and test charge. Is it clear or not? Please tell me. ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज जो आपने लाके रखा था, तो आपने उसको कहीं पर तो रखा होगा ना. You must have placed this test charge at some distance from the source charge. तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है, can I write this value of the force as K Q naught upon R square? Tell me yes or no. Yes, sir. Okay. And as electric field is equal to force upon charge, can we write this as K Q naught divided by R squared upon Q naught? I have done nothing. I just plugged in the formula of force in this formula of electric field. I've just placed the value of force in the formula of electric field. I've just put the value. That's it. I haven't done anything extra. So from this, can I cancel out this Q naught and Q naught? And can I write electric field due to a charge can also be written as KQ by R square? Is it clear or not? Yes, sir. Due to a charge at any given distance, you can find the value of electric field intensity by this formula also. Okay, this formula will be used when you have the value of force and you have the value of test charge. And this formula will be used when a charge is given to you and you are supposed to calculate the electric field. I'll just tell you how. पहले note कर लो. First of all, note it so that I can give you examples. कर लिया note? Yes, sir. Okay. For instance, if I ask you, okay, if you have a charge like this, let's say we have a charge Q is equal to 2 microcoulomb, and I want the value of electric field at this point. What will be the value of electric field at this point? And this point is at a distance of say 10 millimeter. So how will you calculate the value of electric field or electric field intensity due to a charge of 2 microcoulomb at a distance of 10 millimeter? Okay. So what we will use, we know the value of source charge, right? We know the value of the distance at which we are supposed to find the value of electric field. So what we will do, we will simply use this formula of KQ by R square. Clear? Who will tell me what is the value of K? What is the value of K? Who will tell me? K is that electrostatic constant, if you remember. What is the value of K? What is the value of K? Who will tell me the value of K? 9 to the power 18? No, Sona Magmo. It is 9 into 10 to the power 9. है ना? The value of K is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. In SI unit, this is the value. ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ. मैं लिख रहा हूं. ये फोर्स की वैल्यू होती है ना? सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी. अब मैं लिख रहा हूं, मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं या गलत. Am I correct or not? मैंने K की वैल्यू लिख दी 9 into 10 to the power 9. चार्ज की वैल्यू लिख दी 2 और डिस्टेंस लिख दिया 10 का स्क्वायर. मैंने सही लिखा या गलत लिखा? Am I correct or I am wrong in writing these values? Incorrect. Why is it incorrect, Sonam? Yes, very good. SI unit. Yes, Sonam. Yes, Sonam. Good. See,
the unit of charge is not in SI unit because the SI unit of charge is coulomb and charge is written in microcoulomb. So first of all, you will have to convert this microcoulomb into coulomb. And similarly, R is also not in SI unit. So you will have to convert the value of R in SI unit. Means what you are supposed to do? You are supposed to write Q is equal to 2 microcoulomb, which can be written as 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. Right? Because I have already told you in the first class, 1 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb. And what is the value of 1 millimeter? 1 millimeter is equal to 10 to the power minus 3 meter. This means that R will be written as equal to how much? 10 into 10 to the power minus 3 meter, which can even be written as 10 to the power minus 2 meter. Now you can put the values in the formula and you can write E is equal to 9 into 10 to the power 9 multiplied by 2 into 10 to the power minus 6 divided by distance, which is 10 to the power minus 2 squared. So electric field intensity would be equal to, yes, 18 into 10 to the power 9 and 10 to the power minus 6 will become 10 to the power 3 divided by 10 to the power minus 6. So this result will become 18 into this will become 10 to the power 9. And what was the unit of electric field? That was Newton per coulomb in SI unit. Is it clear to everyone? Is it clear to all? Please tell me. Yes, sir. Yes, Okay, sir. so this is how you calculate the electric field due to a charge at any given distance. If you know the distance and you have the value of charge, so you will calculate the value of electric field intensity using this formula. But remember, while using this formula, everything should be in SI unit. Everything must be in SI unit. The value of charge should be in coulombs. If it is not in coulombs, so please convert it into coulombs. Similarly, the unit of distance must be in meters. If it is not in meters, तो please convert it into meters and then solve further. Right? तो इसको नोट कर लो तो मैं आगे बताऊं, आगे कुछ चीजों पर डिस्कशन करूं. आप नोट कर लो. Noted. नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ओके, अब मैं कुछ और डिस्कशन कर रहा हूं, सुनो. ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड एंड बिफोर वी सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैंने अभी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? मैंने अभी बोला था E इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अभी आप लोगों ने भी मुझे बोला था कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. The electric field intensity is a vector quantity. You have told me that. Means electric field will have magnitude as well as its direction. Did you understand? Electric field has magnitude as well as its direction. Clear है? तो देखो, if we have a positive source charge, say if we have a charge and that charge is positive source charge. The electric field due to a positive charge is always directed away from the charge. बात समझिए. This is the direction of electric field. Direction of electric field will always be away from the charge. This is the direction of electric field. This will be the direction if the, please mute your mic. Sonam 12H2. If you have a charge and it is positive, so for positive charge, the electric field will be directed away from the charge. And why will it be the direction, sir? Why the direction will be away from the charge? So try to understand. सर एक बात बताओ, ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, और आपने यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाके रखा. यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज लाके रखा. कैसा चार्ज लाके रखा? बोलो, बोलो ना सर. कैसा चार्ज लाके रखा आपने? टेस्ट चार्ज. You have placed a test charge.
और याद रखना टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा रहता है? टेस्ट चार्ज हमें हमेशा कैसा लेना है? वी ऑलवेज हैव टू Positive. कंसीडर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, सॉरी सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? Repel. रिपेल। तो टेस्ट चार्ज पे रिपल्शन लगेगा तो टेस्ट चार्ज विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज और नॉट, दूर भागेगा। इट विल Yes, टेंड sir. टू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां पर रख दूं तब भी ये दूर भागेगा, यहां पे रख दूं तब भी ये दूर भागेगा। इसका मतलब द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज विल टेंड टू मूव। देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताते हैं हम? डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज मूव्स और टेंड्स टू मूव ड्यू टू द फोर्स ऑफ सोर्स चार्ज इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is determined by is determined by the direction in which test charge will move or tends to move due to force of attraction और रिपल्शन। तो जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज भागेगा या विल ट्राई टू मूव, दैट वुड बी कॉल्ड एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ऐसे ही मुझे बताओ तो, अगर मैं सोर्स चार्ज निगेटिव ले लूं और कहीं पर भी मैं टेस्ट चार्ज रखूं, यहां पर टेस्ट रखूं और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना है, इस केस में क्या होगा? इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक दिस टेस्ट चार्ज विल मूव? टुवर्ड्स दिस सोर्स To, चार्ज और अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज? towards Away from. अवे towards और the टुवर्ड्स? source. Towards the Towards the source source charge. charge. Because in this case, this source charge will Towards. attract this test charge, right? Source charge will attract test charge. And why will it attract? Because because this source charge is negative and test charge is positive. So in this case, test charge will be attracted towards the source charge. Hence, test charge will tend to move towards the source charge. Is it clear? That is why if you have a negative charge, electric field, the direction of electric field for a negative charge will always be towards the charge. Did you understand or not? Please respond. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नोट कर लो सर। कर लिया नोट? Yes, sir. ओके तो आज यहीं तक रहने देते हैं। We'll keep our topic till here. Please go through this, whatever I have taught you today. Please go through this so that when we meet for the next class, you will be able to understand everything that we will be doing in the next class. That you will only be able to understand when you will keep these things in your mind. So please go through whatever I have taught to you. Please go through that
and then we'll connect for next class. Okay. So thank you. I'm leaving now. Thank you, sir. Okay. You're welcome Oh. all. Bye.